It's winter in Calcutta. Still, it's over 20 degrees Celsius outside. I'm on the streets today, trying to find people to talk to about fairness. Not in terms of justice, but the color sort. Fair skin versus dark skin. The signs are everywhere. On giant hoardings, on busy intersections. On the lips of every shopkeeper, gasping at my dark skin, telling me that this cream that they were selling was going to make me fair. It was there on the gossip of wives with their secret tricks to make them look lighter skinned. It was all around me. I've come home to investigate this phenomenon, to talk to men and women from various aspects of life about how this affects them and where they think it comes from. First, I wanted to talk to Joy Uncle, a family friend, and his wife, Mo. They've always been open with me, and I thought they would give me an honest look into the role fairness plays in everyday life. If someone says that color doesn't matter to me, he's 99% a hypocrite. So it's not the color is ruling over, but then if you are really asking me from the core of my heart, I go to a restaurant, I go to a pub, I go to a disco, I go to some place, and I see a group of girls, and out of them I see a fair girl, and I don't know any one of them. The fair girl is always more attractive. It might seem, so it is wrong. Indians still wants to become fair. I don't know what is the reason behind it. I find a lot of tan beauties doing quite well. That's a man's perspective, but I decided to hear women's voices as well. So I went to visit Shagari. She experienced difficulties surrounding her skin tone firsthand when getting married. Sharakun bolto. So all my childhood I have heard that I'm very dusky. তো কেমন করে বলে এরকম সোজা বলে কি হ্যাঁ যে তুমি তো কালো তোমার তো বিয়ে হবে না In fact, by the time I was 20, I'd heard this phrase in Bangla called kurite bul. So which is like, you're dusky and now you've grown old, so you're not going to get married. It's like that. যারা আমাদের থেকেও ফর্সা আমাদের দেখে কেমন করে কালো খুব এরকম অনেকে আছে যে আমরা পাশে দাঁড়ালে বা এ করলে ওরা সেটাকে ভাবে যে আমরা কত কালো নিজেকে অনেক গর্বিত বলে মনে করে মানে রাগ আসে না রাগ আসে না তখন ভাবি অত ফর্সা অত সুন্দর লাগে দেখতে তখন নিজের মনে হয় যে আমিও যদি ওর মতন হতাম তাহলে আমাকেও আর কি এ করতে পারতো না কিন্তু সত্যি সুন্দর দেখতে কি না ফর্সাটা শুধু ফর্সা হলেই যে সুন্দর সেটা কিন্তু না তার মনটাই আসল তাই না আমরা সিস্টারের এরকম হয়েছে রং এর জন্য বিয়ে ক্যান্সেল হয়েছে অনেক জায়গায় তখন সিস্টারের রংটা একটু কি বলবো চাপা তো ওই জন্য অনেক জায়গায় এরকম রিজেক্ট হয়েছে সার্ভিস করতো সবই করতো কিন্তু দিয়া তাও রঙের জন্য অনেক জায়গায় হয় কি করতে হয় একটু বলো তো ফর্সা হতে হলে ফর্সা হতে গেলে একটু কাঁচা হলুদ কি বলবো হলুদটাকে শর্ট দিয়ে করে মুখে মাখা ক্রিম দিয়ে তার সাথে বা মুসুরির ডাল বাটা এইসব দিয়ে ওটাকে পুরো করে ফেসে অনেকক্ষণ মিনিট 5-7 মিনিট এরকম লাগিয়ে রেখে দাও দিয়া তারপরে ভালো করে ওয়াশ করে নাও এটা রোজ বলে স্নানের আগে করতে রোজ
The complexion is fair, but they look horrible with this hair on. Laser hair reduction is one of a great necessity I think people should develop, especially for underarms and bikini line. If you're using laser hair reduction for underarms and bikini line, you feel very hygienic. So if somebody is not thinking from the beauty prospect also, in order to keep hygiene standards high, you should undergo for laser in order to get rid of your underarms and bikini at least. I was worried now. Worried about my underarms, worried about my bikini line, worried about a life without laser hair reduction. But I needed to make sure that they weren't exaggerating. So I decided to investigate further into what the exact steps to become lighter skinned were, and check out whether fair was really lovely for most men. So Dia, this is my BA Jonno Tola photograph. So one, I had to really dress up and go to this place. So the suit that you see, orange as a color was selected because people thought and felt that it would make me look Arabishi, brighter, forsha dekhabe. So, see, this is not my natural skin tone. I mean, you can look at it and you can make out. The onek brightness, bariye, light diye, powder mekhe, takhon ei skin tone ta esheche. And honestly, this doesn't look like me. I mean, otherwise it looks like me, but the skin tone doesn't look like mine. Fairness product, honestly speaking, I don't know if there is any fairness product which is launched in the market which really helps. Yes, products are there which can take away your spots, which can detan you, but the moment your spots are gone, you look fairer. So probably they claim it as a fairness product. দাদু শুনছো না বাবা শুনছো কি বলছে ওরকম ছিল দাদু সবাই ফর্সা মেয়ে চাচ্ছে তো বিয়ের সময় বলো বিয়ের সময় মুখ আমি বলছি যে যেমন দেখতে হোক হ্যাঁ কিন্তু রংটা ফর্সা হলে সব I can't have a complexion of a foreigner. I'm an Indian. Similarly, a darker Indian, probably I'm a little on the lighter side. A darker Indian would not have my complexion. It's the same concept. If I want to become a white skin, I would not, because my pigments inside my body is like this. I can only improve my complexion by detanning myself and taking peels on a regular basis. কারা পছন্দ করে ফর্সা মেয়েকে বা ছেলেরা ছেলে মারা মা বাবা আরো যারা আছে ওদের রিলেটিভরা তার সঙ্গে ছেলেদেরও থাকে. So women have always seemed to want to become fairer, but not only women. I am sorry to say men as well. Even in your time, was it men? Men also. Whenever there is a competition or whenever there is a comparison going on, Fair is lovely. Fair is supposed to be lovely. But for you, according to you, fair is lovely. Fair is still lovely. Yeah? हाँ गोरी लड़की अच्छी लगती है काली काली लड़कियां भी से अच्छी लगती है कौन और अच्छा लगता और अच्छा लगता है कौन सा और अच्छा लगता है है मैंने गोरी ज्यादा अच्छा लगती है. How big do you think fairness is becoming lighter skin? Huge. White versus black? White versus black, white wins. But then suppose there is a competition going on between black versus black. So black wins. It was that bad. Men seemed to really prefer fair women. I had dark skin and that was not going to cut it. Gandhari, a beautician I spoke to earlier, suggested that I bleach my skin and go for a white lotus pearl facial. I think it's burning my eyes and nose off. But anything to become fairer, right? Forsha is the best. ना चूड़ी खनकाए ना सर पे पल्लू डाले ना मुझसे शर्माए ना धीरे धीरे बोले ना चूड़ी खनकाए ये कैसी दुल्हन है ये मेरी उलझन है
My chances for becoming white and pretty were rapidly narrowing. My skin was stinging, my face was bleached, but I did not look any fairer. Aslam, a driver, vouched for Fair and Lovely, a popular mainstream skin lightening brand. So I decided to talk to him and find out a little more. She's very... Just be in the shade. You look extremely dark. Me? Like, but I don't mean in a bad way. I mean, like, I can't really see you. Oh, So I think the sun is like... Let me try from this Do direction. it from those cars, no? No, I have to do it from over here, that's all. Oh, is it fine here? Yeah, come in front over here. कौन-कौन लगाते हैं हमारे घर पे हमारी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरी डॉटर, मेरी मम्मी, यहाँ तक कि मैं भी लगाते हैं। बहुत पहले से जब से फेयर एंड लवली स्टार्ट हुए तब से। तब पूरे फेयर एंड लवली के पूरे फेयर एंड लवली के वो लोग पसंद करते हैं। और बेटी कब लगाने शुरू हुई? कितना बेटी लगाती है, मॉर्निंग में लगाती है। कितने साल की थी? वो आपकी जाके 10 इयर्स की है, वो तो कम से कम 6 इयर्स से वो लगाने स्टार्ट कर दी है। 6 इयर्स से? 6 इयर्स से। और वो चाहती है कि और भी गोरी बन जाए? और भी गोरी बन जाए, अदर्स वो कोई क्रीम नहीं लगाती है। एक और कॉफी देना। दूध नहीं है, कॉफी। बेटी की कमाई यूं ही पीते जा रहे हो। काश हमें एक बेटा होता। कॉफी उनको देना। एयर होस्टेस। बदल दे दुनिया आपकी नए फेयर एंड लवली का 4 स्टेप एक्शन। पहला सनस्क्रीन धूप से बचाए, दूसरा चिपचिपाहट घटाए, तीसरा चेहरे से दाग हटाए और चौथा भीतर से निखारे आपको। बेटा, एक कॉफी मिलेगा? चेहरे पे लिखे नई तकदीर, नया फेयर एंड लवली। People shed out lax, in order to look good with, glycolic peel and combining Botox, combining some amount of filler, because these are all natural collagen. When they are injected on your face, you automatically get that glow. So if you can afford, they're very safe. They're all US FDA approved. So if you can afford, I would encourage anybody to go ahead. But then again, if you have a budget constraint, then a simple glycolic peel would also help. দিয়া সবাই আগে দেখে ফর্সা, সেই জন্য একটা সবার হয়ে গেছে বিশেষ করে মেয়ে হলেই বলবে ফর্সা, আগে দেখবে ফর্সা না কালো রং, কালারটা কালো, বিশেষ করে ম্যারেজ মেয়ে দেখবো তো ফর্সা। যখন তোমাদের বিয়ে হচ্ছিল এরকম ছিল? হ্যাঁ, তখনও তাই ছিল। 76, 71 সব ছিল। তো কি বলতো লোকজন? লোকে তখন বলতো, পরে বলতো সবই তো ভালো, রংটা একটু পরিষ্কার হলে ফর্সা হলে ভালো হতো। আবার আমাকে বলেছিল দেখে যে আমাদের তো আমাদের ছেলে যেহেতু ফর্সা, আমরা ফর্সা মেয়ে খুঁজছি, আমাদের ছেলের রং কালো, আমরা ফর্সা মেয়ে খুঁজছি। ফরমেটিভ ইয়ার্সে আমাকে তো এক বলা হয়েছিল কি আমি খুব ডাস্কি, যে কারণে আমার বিয়ে হবে না। কি ওয়ার্ড ইউজ করে বাংলা? কালো। তুমি খুব কালো? হ্যাঁ, তুমি খুব কালো, তাই তোমার বিয়ে হবে না। আর বিয়ে হলেও ভীষণ একটা বাজে বর পাবে, আর তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নেওয়া উচিত। কেন ভাবে মানে ওরা একটু ফর্সা কালো মেয়েদের থেকে ওরা একটু নিজেকে একটু স্মার্ট ভাবে যে আমি ফর্সা, ও কালো, এরকম আর কি ভাবে। আমার তো তাই মনে হয়। হ্যাঁ, অনেকে আছে, কিন্তু আমরা এরকম দেখেছি। I was reaching the end of my journey, but before I left, I had 2 stops to make. The second stop I wanted to make was to speak to someone from the Indian film industry, an industry that has often combined the ideas of fairness and beauty. So I went to the spacious South Calcutta home of Rupa Ganguly, a popular Bengali film actress. The first was to visit Aslam's family, the avid users of Fair and Lovely. In particular, I wanted to talk to his 10-year-old son Samir, who faced trouble in school because of his skin color. हाँ तो क्या होगा, लेके जाएंगे घर का, तो घर का भी तो थोड़ा होना चाहिए ना, नहीं। आपको आप गोरा होना चाहते हैं? क्यों? काला अच्छा नहीं लगता। क्यों? हमको अच्छा नहीं लगता। लोग कुछ बोलते हैं क्या? काला अच्छा नहीं है? क्या बोलते हैं? बोलता है समीर वैसे काला है,
काला है बोलते उसको बड़ा होकर कोई शादी नहीं बना बोलता है। वो सब क्या गोरे हैं क्या? हाँ? वो सब हाँ, वो सब गोरे। वो भी फेयर एंड लवली लगाते हैं? ये असलम का भी लोग ब्लीचिंग कराते हैं। ब्लीचिंग कराते हैं? ऐसे आपकी उम्र के बच्चे ब्लीचिंग कराते हैं? हाँ बोलते हैं। तो ब्लीचिंग कराते हैं लोग? हम लोग स्कूल में बच्चे लोग करता है, वो जानता है, हम लोग जिसका पास पैसा रहे वही करा। वो लोग बोले इसको कराने तो हम लोग नहीं दे करने, बोले नहीं खबरदार वो सब चेहरा का खराब हो जाएगा। How big do you think fairness is? Why such things? Why you are making it an issue? Because suppose a tall guy is always more attractive than a short guy. So they will always have a preference for a tall guy. So a short guy should not feel ashamed or sad about it. He has to accept that yes, I'm short. I have to make most out of it with my performance. See, an actor today, Rudronil Ghosh. I think, no, I am not sure about the Ghosh. An actor today, Rudronil, okay? He is short. He's not good looking. What does good looking mean? He's not a handsome looking man with fair skin, good, beautiful eyes and Kartik of India. He's not. Yeah, even you, while mentioning good looking, always use it in association with the word fair. Yeah, that's what I'm saying. He's not. और आप क्या सब सोचते हैं कि एक दिन आप और गोरे हो जाएंगे? हो जाएंगे। खाली पाउडर लगाते रहेगा। पाउडर लगाते रहते हैं? खाली पाउडर लगाते हैं, फिर पसीना से मुंह काला हो जाता। फिर काला हो जाता है, फिर बोलेगा पाउडर लगा दो ना, फिर पाउडर लगा दो ना, क्या है वो? आप कितना गोरे होना चाहते हो बोलिए? इनके गोरे। इनके गोरे होना चाहते हैं। पर आप जानते जहाँ पे वो रहते हैं, जाने होगा लंदन, उन पर हंसी मजाक उड़ाते हैं। अच्छा नहीं दिखता है, तो वो आपके जैसा बनना चाहते हैं और आप उनके जैसा। अब क्या होगा? हम पहले फेयर एंड हैंडसम लगा लेते, तब फिर पाउडर लगाते, फिर भी नहीं होता। फिर स्कूल में जब जाते हैं तो फिर ये हो जाता है काले पसीना से। उसको पसीना बहुत होता है। Even a person who is serving at my house as my domestic help, he or she also has a right to view a film, watch a film and get entertained. So you don't expect them to be entertained by film of Satyajit Ray. See, a product like My Fair Lady or something like, a product like Fair and Love. Why it is doing so well? Because people want to be fair? Yeah, it is only bought by domestic helps. Only bought by, those kind of products. I would never believe, I would never want to use something so stupid. Don't you think that's a bit demeaning to say that only lower middle class people buy? Oh, I would never use something so stupid by Fair and Lovely because you become fair. You're supposed to, what I'm saying is, your selling point is fairness. Right. Why? You're supposed to look after your skin. Right. You're supposed to, take care of your skin. An ornament or a beauty cream or something, which would get you a better skin. कुछ नहीं बोलते उनका से मत कीजिए। नहीं, वो गली मोबाइल में अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। ये क्या हुआ? यहाँ का स्कूल क्या है भाई बाबू? तो उतना हाई क्लास थोड़ी इंग्लिश मीडियम। अब जो है यही बस उस सब स्कूल में क्या है, पढ़ाई कम फाकाबाजी ज्यादा। टीचर लोग क्या करती है, फाकाबाजी करती है। आपको कोई टीचर पसंद है? कोई एक टीचर? कोई एक टीचर पसंद है कि सभी ऐसे? सभी है। सभी ऐसे? सर? सर लोग? सर में से भी कोई नहीं। और आपके टीचर क्या बोले हैं आपको? बोलते हैं तुम बहुत काले हो, तुम अच्छे नहीं लगते हो मुझको, ऐसे बोलते हैं। सीधा बोल देते आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं। और आप क्या बोलते हो? हम उनको कुछ नहीं बोलते, अगर हम उनको बोले तो वो उनको मारेंगे। Anything which is pretty is beautiful. Anything, if you are buying a set of flowers, you look for fresh ones. Fresh is fair, so I was wondering, what would you say dark is?
After this, Rupa asked us to leave her home. She did not want to answer any more questions. When I visited Samir several months later, he was still being teased at school, but is working hard now and doing well in his classes. Even if some might not directly come out and say it, housewives, husbands, working women, children, actors and beauticians all tell a tale that echoes the theme that in India, the fairer you are, the prettier you are. The fairer you are, the better you are. Somewhere along the way, listening to everyone's stories, I got a sense that things might be slowly changing. Maybe I was just trying to convince myself. But in a place as colorful as India, maybe that will start coming true. কালো বলে ভালোবাসা দিতে যদি কারো প্রাণে সংশয় চোখ দুটি তার আছে শুধু যেন হারায়েছে সে হৃদয় কালো বলে ভালোবাসা দিতে যদি কারো প্রাণে সংশয় চোখ দুটি তার আছে শুধু যেন হারায়েছে সে হৃদয়